इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा सुपर वीज़ा की। तो जो कनाडा पीआर होल्डर्स होते हैं या कनाडा सिटीजनशिप होल्डर होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को किसी और कंट्री से कनाडा में बुला सकते हैं। और सुपर वीज़ा के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू और डिटेल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। What is the Canada Super Visa? Also known as the Parent Visa in Canada or the Parent and Grandparent Super Visa. This visa belongs to the temporary resident visas. It allows these close relatives to visit their children or grandchildren for a set period of time. The children or grandchildren must be Canadian permanent residents or Canadian citizens. The super visa was created to lengthen the time that parents and grandparents could stay with their loved ones. The Canada super visa allows them to stay for up to 2 years at a time in Canada with their children and grandchildren if they fulfill the requirements. तो ये जो है सुपर वीज़ा जो है, जो स्टे लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए है और 2 साल तक के लिए सुपर वीज़ा मिलता है। Let's move further. Parents and grandparents are not allowed to work or enroll in any part-time or full-time studies. They are also not allowed to try and get Canadian documents or Canadian benefits such as health coverage. मतलब कि जो सुपर वीज़ा है उस पर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सिंपली वहाँ जाके रह सकते हैं, कोई भी कैनेडियन बेनिफिट्स या स्टडीज़ या वर्क वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। Let's see the eligibility criteria. The requirements for super visa is more than extensive than the one for just the visitor visa. In addition to the criteria set for all temporary resident visa for Canada, applicants must go through a medical examination to be considered eligible for super visa. How to complete super visa application? Let's see. Confirm your eligibility for a super visa. Complete the document file and application forms for a super visa. Submit the super visa application. Wait for processing and respond to additional requests for information. Send your passport for stamping. So this is the complete process which has to be applied. Let's move further. Compiling the documents for super visa, you will also have to submit the following supporting documents. The standard document required for any visa for Canada, your bank or financial documents to prove you have enough funds for the trip to Canada, a letter of invitation. लेटर ऑफ इन्विटेशन आपका जो रिलेटिव है कनाडा में वो आपको सेंड करेंगे। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, the immigration status in Canada of your children or grandchildren, bank statement or financial documents of your child or grandchild proving that they meet the low income cutoff criteria. तो ये जो लो इनकम कट ऑफ क्राइटेरिया है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपका जो चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है उसके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके। इसकी डिटेल्स, लो इनकम कट ऑफ की डिटेल्स आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। कवर लेटर फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, टू फोटोग्राफ इन कंप्लायंस विद फोटो गाइडलाइंस, your employment or education status through a resume or diplomas, letter from your employer stating that you have contractual obligations to fulfill and you must return to your home countries. Other documents which prove you will return to your home country such as lease, property deed and so on. Documents that prove that you do not plan to work or study in Canada. Documents which prove that you have private medical insurance that is valid for a minimum of 1 year from a Canadian insurance company that covers the following, that is healthcare,
repatriation and hospitalization, has a minimum coverage of $1 lakh, has a validity of each entry to Canada. Let's move further. Once you submit all the documents required for super visa, you can then proceed to submit the application. After that, you will have to pay the super visa application fee and your application will be completed. Now let's see the visa application fees. The visa application fee is 100 Canadian dollars. Biometrics processing fee is 85 Canadian dollars. Processing time. The processing time for the super visa is 8 days to 50 days. Depends on the country as well कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई करते हैं, ये ज़्यादा या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, द वैलिडिटी ऑफ वीज़ा इज़ 2 years. तो अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं अपने पास कनाडा में फॉर अ विजिट, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा एंड यू कैन ईजिली कॉल देम टू कनाडा टू मीट यू. तो इस बारे में आपको कुछ और भी पूछना है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. I will be really happy to help you. Thanks for watching my channel.